Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will do composition. Now creative writing. Using the words given in the box, write 8 to 10 sentences about the picture given below. बॉक्स में आपको वर्ड्स दिए गए हैं, इनको यूज़ करके आपको जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है आपको 8 से लेकर 8 to 10 सेंटेंसेस इसमें लिखने हैं. फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल yesterday I went to market with my sister and there I saw many people, shops, malls and florist. और इसके आगे आप बॉक्स में से वर्ड्स लेकर के उसे कंप्लीट करेंगे. आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ. Now dialogue writing. Look at the comic strip given below. What are the lady and the bear doing? Number 1. Hello, what are you doing here? You should be in the zoo. Well, ma'am, I heard some people at the zoo saying that everyone has a right to be educated. So here I am. You would not disappoint a poor harmless bear, would you? Oh no. What do I do now? So tell me, don't I look cool in my new uniform? Where do I sit? What are you going to teach me? Yes, they are having a conversation. If we were to write the dialogue without the picture, it would look like this. अगर पिक्चर के बिना लिखेंगे डायलॉग तो इस तरीके से होगा. टीचर, हेलो, what are you doing here? You should be in the zoo. Bear, well ma'am, I heard some people at the zoo saying that everyone has a right to be educated. So here I am. You would not disappoint a poor, harmless bear, would you? Teacher, oh no, what do I do now? Bear, so tell me, don't I look cool in my new uniform? Where do I sit? What are you going to teach me? Now write down the words in the speech bubbles in a dialogue form. जो bubbles में जो speech है इसको dialogue form में अब आपको नीचे लिखना है, जैसे हमने previous part में read किया था. In the same way इस part में आपको इसको read करके यहाँ पर complete करना है. Now next is article writing. Articles are generally meant to be published in newspapers or magazines for the masses to read about a particular issue by a reporter or a journalist. Articles can be written on any issue concerning commonplace. An article has the following parts. जो articles होती हैं, articles हम कहाँ use करते हैं? न्यूज़पेपर में या magazines में देने के लिए, ताकि उसको number of people read कर सके. Article has the following parts. ये main parts होते हैं articles के. The topic and the name of the author. Introduction to the topic and its causes. Some facts related to the topic. Effects and counter effects, if any, और उसके बाद conclusion. Now read the following article carefully and then try to write yourselves on the topics given for practice. Number 1. Global warming by Prashant Kumar. Global warming is a burning issue today in the whole world. No country is left without its deadly effects. The Earth's temperature is increasing at a drastic rate. Excessive heat is melting the icebergs, resulting in an increase in the sea level. Greenhouse gases like carbon dioxide, methane, and chemicals called CFCs are trapping the heat into increase the temperature. As a result of global warming, the nature habitats of animals like the polar bears, reindeers, penguins and seals are threatened to exist. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग एक आज का मेजर इशू है, क्योंकि इसकी वजह से जो है टेम्परेचर डे बाय डे
इंक्रीज होता जा रहा है और इंक्रीज होने की वजह से जो आइसबर्ग्स हैं वो मेल्ट होते जा रहे हैं और आइसबर्ग जब मेल्ट हो रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, जो सी लेवल है उसका लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। ग्रीन गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और CFCs हैं, वो क्या कर रहे हैं, हीट को इंक्रीज कर रहे हैं, डे बाय डे वो हीट को इंक्रीज कर रहे हैं और उसके रिजल्ट की वजह से जो एनिमल्स हैं, उनके जो नेचुरल हैबिटाट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, खतरे में आ रहे हैं, उनका जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में आ रहा है। एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, कार एग्जॉस्ट एंड इंक्रीज्ड यूज ऑफ ACS आर द मेजर फैक्टर ड्यू टू विच ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग। ग्लोबल वार्मिंग का जो इंक्रीज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जो फैक्ट्रीज से जो स्मोक निकलता है बाहर और उसकी वजह से क्या होता है, जो एक्सेसिव नंबर में ACS का जो यूज़ हो रहा है, ये मेजर फैक्टर है जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रहा है। नाउ विच ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू इंक्रीजिंग सी लेवल, द कोस्टल सिटीज विल बी अंडर water in near future. In the next few years, cities like Tokyo, Mumbai, New York and cities close to the sea will drown in water. जो सी के पास में जो एरिया हैं, जो सिटीज़ हैं, वो जल्दी ही पानी में चली जाएंगी, अपना एग्जिस्टेंस इनका ख़त्म हो जाएगा। Man is himself responsible for all this future calamity. He should wake up and plant trees. Exhaust from cars and other vehicles and factories should be stopped. Only then we can hope to control global warming. Global warming का जो मेन उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, वी ह्यूमन बींग्स जो हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को प्लांट करना चाहिए और जो धुआं निकलता है व्हीकल से या फैक्ट्री से उसको रोकना चाहिए और अगर हम ये सब कर लेते हैं तो हम ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं। तो दिस इज योर एक्सरसाइज, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। नेक्स्ट इज स्टोरी राइटिंग। A short story is a short composition of fiction or imagination. It means that stories can be both imaginative and realistic. Stories imaginative भी हो सकती हैं और realistic भी हो सकती हैं. Stories are usually written in easily understandable grammatical structure with natural flow of ideas and speech. स्टोरी को इस ढंग से लिखा जाता है कि वो easily उसको हम समझ सकें और उसको ग्रामेटिकली जो है करेक्ट वे में उसको इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड किया जाता है कि उसमें जो आइडियाज़ होते हैं वो नेचुरली वन आफ्टर अनदर फॉलो होते चले जाते हैं। द मेन पार्ट्स ऑफ अ स्टोरी आर सेटिंग, कैरेक्टर, प्लॉट, टाइटल एंड थीम। ये सब उसके मेन पार्ट होते हैं। एग्जाम्पल, राइट अ स्टोरी ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन आउटलाइन। पुअर वुड कटर अर्नड लिविंग cutting wood, X falls in the river water, didn't know swimming. Poor, to buy new eggs, weeps. God Mercury appears. Woodcutter tells whole story. Mercury takes pity, brings gold. X refuses silver. X, not his, refuses. Iron X, happy. God pleased, gives all the excess, honestly rewarded. अब इस हिंट से आपको स्टोरी कैसे कंप्लीट करनी है देखिए। टाइटल सबसे पहले, द ऑनेस्ट वुड कटर। There lived a poor woodcutter in a village. He earned his living by cutting wood and selling it in a nearby town. One day when he was cutting wood from a tree on the bank of a river, his axe slipped from his hands and fell into the river. He stepped down and searched for it in water along the bank. He didn't go into deep water because he didn't know how to swim. He was too poor to buy a new axe. There being no way out, he sat on the bank and burst into tears. God Mercury heard him weeping. He took pity on him and appeared before him. He asked why he was weeping. The woodcutter told him the whole story. God Mercury was moved by his weeping. He dived into the river and came out with a golden axe and asked him if it was his axe. The woodcutter said, "No,
this is not my eggs, and refused to take it. God Mercury again dived into the water and came out with a silver egg. The woodcutter again refused to take it as it was his. God Mercury dived once more and brought an iron axe. The woodcutter was happy to see his axe. He cried out, "This is my axe, this is my axe." God Mercury was so pleased at his honesty, and he gave him all the 3 axes as a reward of his honesty and disappeared. Now, this is your exercise. You have to do in the same way. Now, next is letter writing. Letters can be of 2 kinds, formal letters and informal letters. Formal letters are letters to teachers and principals, letters to business firms, letters of invitation, letters of complaint, letters of editors of newspapers, letters to government officials, and letters of applications for job. Informal letters are letters written to family members and friends. All formal and informal letters must have the address of the person you are writing to, the date of writing the letter, the name of the person you are writing to or addressing, and your name. जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो हम ऑफिसेस के लिए लिखते हैं, एडिटर्स के लिए लिखते हैं, प्रिंसिपल के लिए लिखते हैं, और जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं वो फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के लिए लिखे जाते हैं. लेकिन जो हम लेटर्स को लिखते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे उसमें एड्रेस लिखना जिस पर्सन के लिए हम लेटर दे रहे हैं, डेट और नेम ऑफ द पर्सन यू आर राइटिंग टू और एड्रेसिंग, और उसके बाद नाम, आपका नाम. नाउ इनफॉर्मल लेटर, नंबर 1 योर एड्रेस. आपका एड्रेस क्या है? 5B124 कैलाश नगर, न्यू दिल्ली. देन डेट 17/5/2022. सैल्यूटेशन, डियर आंट शांति. नाउ सैल्यूटेशन, उसके बाद थैंक यू वेरी मच फॉर द कैमरा दैट यू सेंट विद ग्रैंडमदर. I liked it very much. Now body. I have not been able to use it much because mother wanted me to study for my exams, but I plan to join a short course on photography during my holidays so that I can learn to use the camera properly. I also hope to take some good photos when you come here next month. We can visit some tourist spots nearby. Now then, conclusion. Please give my regards to Uncle Bhanu. I look forward to seeing both of you. Then subscription, yours affectionately, your name Dinesh. I hope it is clear to you now. It's time to revise. You can revise it.